वेलकम यू ऑल। आज हम थर्मोडायनामिक्स को कंटिन्यू करेंगे और पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट को लेकर स्टडी किया था और हमने उसमें डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर और फॉर नंबर ऑफ मोल्स यू कैन राइट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। और हमने उसमें ये भी किया डिस्कस कि Cp specific heat at constant pressure is always greater than specific heat at constant volume। वो क्यों है उसके लिए आप प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एनर्जी टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT एंड टोटल एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT। ये इन टर्म्स ऑफ मोल है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। So here per molecule you can write 3/2 kT and per mole you can write 3/2 RT। तो बाद में आप NB और यहाँ moles भी डिस्कस कर सकते हैं for a system of gases। But in our previous lecture we also discussed that Cv is equal to 3/2 this U is equal to, suppose in our previous we proved that U is equal to 3/2 RT and then we find out that specific heat at constant volume is equal to 3/2 R, and similarly we found that specific heat at constant pressure given by Cp is equal to 5/2 R. Now this is for a 1 mole of gas and for a monoatomic gas. That how you calculate the specific heat for monoatomic gas and change of specific heat with the increasing temperature, or how internal energy changes with the increasing temperature. That is how specific heat is calculated for the monoatomic gas. Now today's topic that we move towards, in today's topic we will move towards the specific heat for diatomic gases and triatomic gases। ट्राइएटॉमिक गैसेस में क्या होगा और डायटॉमिक गैसेस में क्या होगा। अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो उनके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैलकुलेशन का है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कैसे करते हैं। क्योंकि जब मोनोएटॉमिक गैस होगा तो ऑब्वियसली यू टैग गैस मॉलिक्यूल एज अ पॉइंट मास, इट कंसीडर्ड दैट एज अ पॉइंट मास, या अकॉर्डिंग टू पॉइंट मॉडल सिस्टम हम इस्तेमाल करके इसके एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, बाद में स्पेसिफिक हीट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली जब हम इसको पॉइंट मास कंसीडर करते हैं तो रैंडमली जब ये मूव करेगा किसी सिस्टम में, या अगर कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं और हमने पिस्टन को कंप्रेस किया तो ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल के अंदर मोशन बढ़ेगी, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये मोशन कैसे बढ़ती है, हम यहां कहते हैं कि इन मोनोएटॉमिक गैस देयर इज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, लेकिन जब हम डायटॉमिक गैस ले लेंगे, सपोज ऑक्सीजन गैस ले लेंगे या कोई भी गैस ले लेंगे, तो यहां डायटॉमिक मॉलिक्यूल सिस्टम है, तो यहां ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ इसमें रोटेशनल भी आएगा एंड वाइब्रेशनल भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम कह रहे हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of molecule is equal to 3/2 RT, then we have to add up the rotational kinetic energy also, and we have to add up the vibrational kinetic energy also. For monatomic gas, we are talking only translational kind of motion, as kinetic energy due to translational motion. But we are talking about diatomic molecule. There are all these things supposed to happen, like rotational and vibration. First, let me tell you clear that we don't discuss vibrational motion in case of diatomic molecule.
We don't discuss at all. Why? This is a quantum phenomena, and the student who wants to have a career in physics will learn in future why vibrational modes are not considered here in a diatomic molecule. So we will talk about the rotational kinetic energy. So we are adding up to the translational kinetic energy, we are adding up another motion, that is vibrational kinetic energy. अब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज ट्राइटॉमिक गैस होगा या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे, उनमें तो जो मोशन होगी वो डिफरेंट पैटर्न की होगी. All the three motions will be there. This translational, rotational and vibrational. तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो मोनोएटॉमिक गैस में आपने स्पेसिफिक हीट स्टडी की फॉर मोनोएटॉमिक गैस, लेकिन डायएटॉमिक गैस में आपको रोटेशन के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि टू प्रोड्यूस rotational motion, to produce rotational motion in case of diatomic molecule आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, you get that easily, but for rotational motion, to produce rotational as well as vibrations, you need more energy, you need more internal energy, you need more enhancing temperature. वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टेम्परेचर है वो रोटेशन में भी चला जाएगा, रोटेशनल मोशन में भी चला जाएगा और वाइब्रेशन में भी चला जाएगा, जिसकी वजह से इसमें स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी. तो इसका मतलब है डायएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ग्रेटर होगा देन मोनोएटॉमिक गैस से, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करनी है और उसका एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि कितना इसका टेम्परेचर रेज होगा. तो रेज टेम्परेचर 1 डिग्री, हाउ मच एनर्जी यू नीडेड. तो मोनोएटॉमिक में ऑब्वियसली कम ही होगा, लेकिन डायएटॉमिक में आपको रोटेशन भी स्टडी करनी है, वाइब्रेशन भी स्टडी करना है. दैट मीन्स रोटेशनल अपनी एनर्जी ले लेगा, वाइब्रेशन अपनी एनर्जी ले लेगा. तो स्पेसिफिक हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इन केस ऑफ डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, यू नीड मोर एनर्जी, यू नीड मोर इंटरनल एनर्जी, यू नीड मोर टेम्परेचर. So that's why the specific heat for diatomic or triatomic is more than the monoatomic gas. अब ये जो complex molecules में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कैसे होगा? मोनोएटॉमिक गैस में आपने सिंपली कैलकुलेट कर दिया बाय ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जहां रोटेशन भी है और वाइब्रेशन भी है, वहां आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक हीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्पेसिफिक हीट फॉर डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए आपके पास एक प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करने से पहले मैं अगर मोनोएटॉमिक गैस लेता हूं, सपोज मोनोएटॉमिक गैस कंटेनिंग द कंटेनर, और मैं यहां कह रहा हूं कि मोनोएटॉमिक गैस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है. तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में बात करता हूं, जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी बेस्ड, डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. अब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, तो इसका मतलब है सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है इसका मॉलिक्यूल, इसकी वेलोसिटी v है. ऑब्वियसली इस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स होंगे, vx along x axis, vy along y axis and vz along z axis. This is the third part of the total velocity along the x axis. This is the second part of velocity along the y axis. This is also third part. Vx is the third part of the velocity. Vy is also third part, and the sum of these components, that is Vxi plus Vyg plus Vzk, gives the total velocity in vector form. इसका मतलब है V के तीन components है, and I am calculating the total kinetic energy V. But V has different components. Every molecule has its own components.
Every molecule has its own components. तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है कि ट्रांसलेशन मोशन भी कि जितने भी वेलोसिटी कंपोनेंट्स है या रोटेशन में जितने भी वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन कंपोनेंट्स है, यानी कि चाहे लीनियर वेलोसिटी हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, जितने भी वेलोसिटी कंपोनेंट्स है वो इक्वली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अलोंग द कंपोनेंट्स Vx, Vy, Vz, और इन्हीं वेलोसिटी पे कौन सी एनर्जी डिपेंड है? काइनेटिक एनर्जी। But the kinetic energy is distributed equally along the components. So you have three components here. So velocity along x-axis plus velocity along y-axis plus z-axis is equal to total velocity. So velocity along x-axis is equal to velocity along y-axis is velocity along z-axis. This gives 1 by 2 mv square. Velocity along x-axis is equal to velocity, kinetic energy along y-axis is equal to kinetic energy along z-axis. वो इसका मतलब है आपकी एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो या वो लीनियर वेलोसिटी हो, हर एक कंपोनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलोंग द कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। या जब हम तमाम कंपोनेंट्स को इन ऑर्डर टू स्टडी द कंप्लीट मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल बाय नोइंग द कंपोनेंट्स, चाहे वो ट्रांसलेटरी हो या रोटेशनल हो, रोटेशनल कंपोनेंट्स हो या ट्रांसलेशनल कंपोनेंट्स हो, जब हम एक मॉलिक्यूल की कंप्लीट मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, to describe the complete motion of a molecule, to check how many components are working there, each component को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें कह रहा है कि हमारे पास कितने वेज है टू गेन द काइनेटिक एनर्जी, टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स हर एक कंपोनेंट के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है। And according to degree of freedom, or according to equipartition principle, every degree of freedom is associated with energy 1 by 2 kBT. This is the energy associated with each degree of freedom. So, number of degree of freedom describes the complete motion of a molecule. को कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के पास है, दैट डिस्क्राइब्स इट्स कंप्लीट मोशन, और इसकी एनर्जी को हमें इसकी एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का ये है कि जो एनर्जी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अलोंग द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, एंड द नंबर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स which describes the complete motion of a molecule is called the degree of freedom. So the total energy per degree of freedom is 1 by 2 kBT. So अगर हमारा एक मोनोएटॉमिक गैस में एक मॉलिक्यूल है, obviously along 3 coordinate axes it has 3 velocity components. So obviously per coordinate या per component का जो energy associated है that is 1 by 2 kBT. So this molecule in a monoatomic gas has 3 degrees of freedom. So you can write 3 into energy per degree of freedom kBT. So energy associated with monoatomic gas is 3 by 2 kBT, or U is equal to 3 by 2 RT in case of mole and in case of number of molecules. Similarly, या आप ऐसा कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये भी मतलब है कि हम कितने रास्तों से एनर्जी गेन कर सकते हैं, और इक्विपार्टीशन एनर्जी है
कि जितने भी कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एनर्जी इक्वली, एवरेज एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलॉन्ग विद ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स, और एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंड एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kBT, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनके तीन कंपोनेंट्स है Vx, Vy और Vz, और हमें पता है कि एक कंपोनेंट में जो एनर्जी जाती है 1/2 kBT, और आपके तीन कंपोनेंट्स है, यह है 3/2 kBT, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंगल मॉलिक्यूल। अब अगर आप डायटोमिक गैस की बात कर रहे हो, डायटोमिक गैस में अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिस्कस करते हैं। डायटोमिक गैस में, डायटोमिक गैस, इसके भी अपने तीन होंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स, इसके भी अपने तीन होंगे अलॉन्ग थ्री कोऑर्डिनेट्स, तो इसके तीन और इसके तीन 6 हो गए, लेकिन जो ये कॉमन बॉन्ड है, यहां से इसको कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलती है। इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला याद रखनी है। So you can calculate the formula F is equal to 3n minus K. N is the number of molecules, K means the number of bonds, या number of coordinates, common coordinates भी कह सकते हैं, number of bonds भी कह सकते हैं। ये माइनस करना है। F is equal to, for monatomic gas, your N is equal to 1, so you have 3 into 1 minus K, K मोनोटोमिक गैस में कोई बॉन्ड ही नहीं है, ये अलग ही घूम रहा है हर साइड से, so 0, so F is equal to 3. So your degree of freedom is equal to F is equal to 3 for a monatomic gas. For diatomic gas, you have F is equal to 3n minus K. Obviously n is equal to 2, और आपका एक बॉन्ड है, K is equal to 1, then F is equal to 3 into 1 minus 1, 3 into 2 minus 1, so F comes equal to 6 minus 1, F is equal to 5. So for diatomic molecule, your degree of freedom is 5. यानी कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी है डायटोमिक मॉलिक्यूल को। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल 5 कंपोनेंट वेलोसिटी कैसे हैं, जैसे हमने मोनोएटॉमिक में कहा, मोनोएटॉमिक में हमने कहा एक Vx कंपोनेंट है, एक Vy है, एक Vz, यहां से भी काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, यहां से भी काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, यहां से भी काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी डिग्री, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारा kB2 होता है, पर डिग्री में 1/2 kBT होगा, पर डिग्री में 1/2 kBT होगा, ये 1/2 kBT 1/2 kB 3 टाइम्स आ गया 3/2 kBT, ये आ गया फॉर मोनोएटॉमिक। डायटोमिक में आपका ये मॉलिक्यूल है, और मैंने कहा था F इज इक्वल टू 3n minus K, so diatomic N is 2, 0 3 into 2, and number of bonds minus 1, you get 6 minus 1, you get 5. अब डायटोमिक में क्या है, आपका ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऑब्वियसली यहां पहले ट्रांसलेशनल के 3 होंगे, यानी कि 5 कैसा है, आपके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। यानी कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल या तो इस एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे घूमेगा, या z एक्सिस के गिर्द गिर्द ऐसे घूमेगा। यहां सिर्फ 2 रोटेशंस होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अगर आप अलोंग एक्सिस लेते हैं तो एक रोटेशन होगी अलोंग z एक्सिस और दूसरी रोटेशन होगी अलोंग y एक्सिस। अगर आप अलोंग द y एक्सिस मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक होगी अलोंग द x एक्सिस, दूसरी होगी अलोंग द z एक्सिस, और वो जो एक्सिस होगी खुद की एक्सिस, वहां पे इनर्शिया 0 होगा, तो वहां पे आप, मैं ऐसे समझा दूंगा, आपका 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mvy स्क्वायर प्लस 1/2 mvz स्क्वायर। तो ये है 3 काइनेटिक एनर्जीज, रोटेशनल का, दिस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज 1/2 kBT लिख सकते हैं, 1/2 kBT 1/2, और 2 होंगे, 3 होंगे रोटेशनल। 3 अगर मैं रोटेशन मानता हूं 1/2 I x ओमेगा स्क्वायर प्लस I/2 I y ओमेगा y स्क्वायर प्लस I
1/2 I z ओमेगा z स्क्वायर। तो अगर हम along the z एक्सिस लेते हैं, if we take the rotation along the z एक्सिस, तो z एक्सिस में जो इनर्शिया होगा वहां पे r जीरो होगा, अपनी एक्सिस के इर्द होगा, वहां पे इनर्शिया जीरो होगा। So this component will be zero. You will get only these two components, and these three components, this 3 plus 2 gives 5 degree of freedom. Because जिस एक्सिस को तुम कंसिडर करोगे उस एक्सिस में जो I होगा that will be zero, that will not contribute in terms of degree of freedom. Hence वो डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाएगा, बाकी ये ऐड हो जाएंगे। यू विल गेट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। आपको ये एक्सिस रोटेशन के बेस पे अंडरस्टैंड करना होगा कि यहां पे आई कैसे जीरो हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं, मोनोएटॉमिक गैस में वो अगर हम एक्सिस रोटेशन ले लेंगे, वो उसके ओरिजिन से ही गुजर रही है। अगर मैं पॉइंट मास ले रहा हूं, यानी कि स्मूथ हार्ड सेफियर मेथड के हिसाब से, स्मूथ हार्ड सेफियर मॉडल एक मॉडल है जो मोनोएटॉमिक गैस को एक्सप्लेन करता है, स्मूथ हार्ड सेफियर मॉडल या पॉइंट मॉडल, पॉइंट सेफियर मॉडल भी है। तो यहां पे जो आई होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, सो देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि यहां पे भी आई इक्वल टू जीरो। सो आई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ दिस मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि inertia यहाँ जीरो बनेगा because this axis of rotation is passing through the center of this point mass। और for point mass के लिए आपका r जीरो होगा because you are considering the point mass। अगर ये सिफर होता है for some radius और आप किसी पॉइंट को डिस्कस करते then you can take some value, but you are talking about the point, this point mass या point object। in case of point object your r is zero, so your I becomes equal to zero, so your rotational component becomes zero। Hence, there is only three components of velocity, that is Vx, Vy and Vz, और उन्हीं को हम degrees of freedom कहते हैं। There are 3 degrees of freedom। So this is the formula F is equal to 3n kT for diatomic molecule, and this is the reason why either if this axis is considered, then these two components will work। If this axis is considered, then these two components will work। तो आपको किसी ने इसी को एक्सिस माननी है तो आप एक कंपोनेंट जीरो बन जाएगा। तो यू हैव 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली फॉर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल वी कैन हैव, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल सो F is equal to 3n minus k। if this is one more molecule, another molecule, then they have 2 bonds, यानी कि कॉमन कोऑर्डिनेट्स। सो F comes out to be equal to 3 into 3 minus 2, so F is equal to 9 minus 2 is equal to 7। For linear molecules, for triatomic linear molecules, for triatomic gas, for linear molecules your degree of freedom is equal to 7। If these molecules are not linear, for non-linear, if they are cyclic, then you have 3 bonds। For cyclic, or you can write non-linear, your F can have for non-linear or cyclic triatomic gas molecules, F is equal to 3 into 3 minus 3 bonds are there, so F is equal to 9 minus 3, so degree of freedom is 6। We can have a different degree of freedom for monatomic, diatomic, triatomic, and triatomic is 2 components, 2 methods, one is linear and non-linear। So the degree of freedom gives the components by which you are gaining the kinetic energy। So you need, in case of triatomic gas, you have a 6 and 7 degrees of freedom। So average energy you can write, or I can say average energy for monoatomic gas have 3/2 RT, or du by dt at C gives specific heat at constant volume gives 3/2 R।
Similarly, for diatomic gas, you have U is equal to 5 by 2 RT, or you can generalize it. We can put down the general formula, then accordingly we will find out. We can put general formula. We have find out for monoatomic gas, F is equal to 3. For diatomic, F is equal to 5. For triatomic linear, F is equal to 7. For triatomic non-linear, F is equal to 6. So the total energy can be in terms of degree of freedom. Now, how to calculate the total energy in terms of degree? I can write F is equal to, so F is a degree of freedom into, F is the degree of value of degree of freedom into energy per degree of freedom, that's 1 by 2 kBT. So total energy, internal energy, is the number of having the degree of freedom you have into kBT, or you can write U is equal to F by 2 into 1 by into kBT. Same, लेकिन actually it is number of degrees of freedom into 1 by 2 kBT. एक कंपोनेंट में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी होती है. आप ये लिख सकते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी per degree of freedom is 1 by 2 kBT. एनर्जी per molecule is 3 by 2 kBT. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है. एनर्जी per degree of freedom is 1 by 2 kBT, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कंपोनेंट दिखाता है. अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस कंपोनेंट से जा रहे हैं तो 1 by 2 kBT है. अगर आप सिर्फ वाई एक्सिस के कंपोनेंट से जा रहे हैं तो 1 by 2 kBT है. अगर आप जेड एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं तो 1 by 2 kBT है. लेकिन अगर आप पूरी मॉलिक्यूल का मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो फिर तीनों का ऐड हो जाएगा. तो ए का भी kBT, दूसरे का भी kBT, एक्स एक्सिस का kBT, वाई एक्सिस का kBT, जेड एक्सिस का kBT, तीनों kBT ऐड हो जाएंगे, वो बनेगा 3 by 2 kBT. दिस इज टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड दिस इज टोटल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. So total energy per degree of freedom और total energy per unit molecule या total energy per unit mole में फर्क होना चाहिए. So this is degree of freedom into energy associated with each degree of freedom. Total energy is degree of freedom multiplied by the total energy associated with the each degree of freedom. अगर आपके पास 3 degree of freedom है तो monoatomic gas गिर जाए 3 by 2 kBT. So for monoatomic gas you have E is equal to F के बदले 3 आ जाएगा into 1 by 2 kBT. You get U is equal to 3 by 2 kBT. आपका डायटोमिक के लिए फॉर डायटोमिक you have F5, so you can write U is equal to 5 into 1 by 2 kBT. That's U is equal to 5 by 2 kBT. And similarly for triatomic, you have U is equal to 7 into 1 by 2 kBT. This for linear, that's U is equal to 7 by 2 kBT. And for non-linear, you have U is equal to 6 by 2 kBT. That's equal to 3 kBT. This is the total energy in terms of specific heat at constant. So this is the total energy associated with the degree of freedom. This is for diatomic gas. This is for non-linear triatomic, linear triatomic. This is non-linear triatomic, and this is for monoatomic gas. Energy associated with the Let's total internal energy for monoatomic, diatomic, and triatomic. You can write same in terms of moles. So you can write for monoatomic 3 by 2 RT, for diatomic 5 by 2 RT, for triatomic linear 7 by 2 RT and 6 by 2 RT. बस in terms of mole ये होगा, and in terms of
मॉलिक्यूल ये होगा। R फॉर मोल्स एंड N फॉर मॉलिक्यूल्स, या आपका N या इन टर्म्स ऑफ K फॉर मॉलिक्यूल्स एंड R इन टर्म्स ऑफ मोल्स. दिस फॉर monoatomic, di, tri for non-linear, and this for non-linear, this for linear. So this is a general formula. You can remember that U is equal to the general formula that U is equal to F by 2 into KBT. So substituting the value of F, you get the internal energy for the monoatomic, diatomic, and triatomic gas. So I know du by dt gives at constant volume, gives specific heat at constant volume, that is equal to F by 2 kb. So you can write Cv is equal to, for monoatomic, write 3 by 2 kb. Or you can write in terms of U is equal to F by 2 RT. So you can write du by dt at constant volume is equal to Cv, this 3 by 2 R. Obviously T come 1 आ जाएगा. So you get that Cv is equal to 3 by 2 into R is 8.314. That comes out equal to 12 point something. Similarly for diatomic molecule you calculate. So U is equal to, giving the value 5, is 5 by 2 RT. You can calculate du by dt. Differentiation with respect to T का 1 आ जाएगा. You get 5 by 2 R. Substituting value 5 by 2 into R is 8.314. That gives you 20 point something. You can calculate the specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume for diatomic molecule, specific heat at constant for monoatomic molecule. तो obviously specific heat बढ़ता जा रहा है. आप फिर 7 by R लगा दीजिए. Specific heat for triatomic, Cv is equal to du by dt. That's equal to 5 by 2. Here we have 7 by 2 for linear into R. That is 7 into 8.314 divided by 2. That was 28 point something. Your specific heat from 12 to 28 to 28, 12, 20 minus 28 difference here also, 28 minus 28 difference also, that specific heat is increasing. It indicates that from monoatomic to diatomic to triatomic, your specific heat increases. Specific heat increase means you have to give the more temperature. At that temperature will be utilized for some vibrational motion, for rotational, for translation motion. इसका अगर हम एक जर्नल टेबल बना देते हैं और इसके ऊपर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं स्पेसिफिक हीट का. सो सपोज हम इसका ग्राफ बना मोनोएटॉमिक गैस ऐसे फॉर मोनोएटॉमिक यहां पे हम लिखेंगे मोनोएटॉमिक. जस्ट वेट अ मिनट. monoatomic, diatomic, triatomic. ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी रखते हैं, यहाँ CV का वैल्यू रखेंगे, यहाँ हम CP का वैल्यू रखेंगे और यहाँ हम CP बाई CV वैल्यू रख सकते हैं. वो भी निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम. फॉर मोनोएटॉमिक गैस here डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. The total energy is 3 by 2 RT. That you know
T को फिर डिफरेंशिएट करेंगे U के साथ, U डिफरेंशिएट विद T, get specific heat, that's 3/2R. And you know Cp minus Cv is equal to R. Cp is equal to Cv plus R. R को हर जगह ऐड करना है with Cp, that is 3/2R plus R. This is 3.5 means 1.R plus R gives a 5/2R. So this is a 5/2R. And this is 5/2, this is a gamma correction factor. This ratio of 5 Cp by Cv. There's 5/2, 2 cancels, there's 5 divided by 3. That will be equal to some value. Similarly, you have diatomic molecule, degree of freedom is 5. You have 5/2 RT, and your Cv comes out to be 5/2 R, and you have to add R to Cv, you get Cp, that is 7/2 R. So you get here 7 divided by 5. It is 5 divided by 3, 7 divided by 5. So for triatomic linear, this is triatomic linear, you can have linear. हम नॉन linear लेंगे पहले, नॉन linear, उसका वैल्यू कम है 6. You have 6/2, that's 3RT, and you get 3RT, another R add 3RT R, you have 4RT 4R, obviously, sorry 3R, you add this R, another 1R, you get 4R, and you get 4/3, that is some value. And triatomic non-linear, triatomic non-linear, you have 7 degree of freedom, you get 7RT, you get 7R, 7/2 RT, you get 7/2R, and then you add 7/2 R, get 9/R somehow, that is Cp comes out to be equal to 7/R, 7/2 R plus 1 into R, that is 7 plus 2 divided by 2 is 9/2 R, 9/2 R, and you get here 9/7 ratio. The value of Cp by Cv, gamma, 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 and gamma. So you can calculate the gamma, the ratio of Cp by Cv for a monoatomic, for a diatomic, for triatomic non-linear, for a triatomic linear. They have different values. There's 1.6, 1.4, like that. 5 divided by 3. You can calculate the value, and then you can check the ratio of those very specific heat, that 5/3 equal to 7/5 equal to 4/3. They will come greater than 1. So this is how you can write the table for a specific heat for calculating the degrees of freedom. Can you remember? Then you calculate the total internal energy associated with each degree of freedom. Then their specific heat at constant volume. Then the specific heat at constant pressure. Then the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat constant volume is some gamma. Then their values you can calculate using the Kelsey 5/3, 7/5, 4/3, and 9/7. These will be values greater than 1. But you can check whether there is ascending order or in descending order. You can calculate it yourself. Now this is the table where you have all values of specific heat for constant for monoatomic, diatomic, triatomic gases at constant pressure and constant volume. Now, to discuss further the graphical representation of, say suppose I have taken hydrogen gas. This is R/2, this is R, this is 3R/2, this is 2R, this is 5R/2. It's like going on 3R, 7R/2, 9R/2. Here 50, 100 is going on, then 1000 and going 2000, like that.
This is for hydrogen gas. Above 50 Kelvin, your monoatomic gas, ग्राफ इसका ये होगा, उसका जो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3/2R होगा एट 50 डिग्री केल्विन। 50 डिग्री केल्विन पे इसका चेंज हो जाएगा, तो यहां पे नियर अबाउट 100 पे ये मोनोएटॉमिक गैस पे टच करेगा ये ग्राफ, एंड देन गो ऑन अबव द 100, अबव नियर अबाउट 500 600 it will start jumping over the 7/5 ट्राइएटॉमिक गैस के साथ ही जंप करेगा. So up to 50 Kelvin, above 50 Kelvin, it will behave as monoatomic gas. Then above 50 to 100, it will start and reach up to 5/2 degree of freedom. And above 100, up to above 100, it will behave like this. Then moving on above 600 or something, it will go move up to 7/5 degree of freedom. This यहां तक जो मोशन होगी that will be completely translational kinetic energy, and between these two this will be rotational kinetic energy, and then this will be vibrational kinetic energy. यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो आपका पहले ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद वो रोटेशनल एनर्जी लेना शुरू करेगा, उसके बाद वो वाइब्रेशन लेना शुरू करेगा. तो विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, with the increasing internal energy, your temperature is utilized in first translatory motion, then rotational motion, then vibrational motion. तो फिर all the three types of motion ले जाते हैं with the increasing temperature. The temperature is then distributed in terms of translatory, then rotational, then vibrational. So इसका मतलब है कि 600 above Kelvin ये vibrational mode लेता है, and below 600 it takes rotational mode, and below 50 it has an only translational kinetic energy. This portion is only translational, this is a rotational portion, and this is vibrational mode of energy. So this is the graphical representation of the different motions in case of gases. Thank you very much. We'll be looking at you in next lecture.